So hello students, I hope you all have seen the last video that was uploaded. Now in the last video we have talked about the participation of the people. पहले हमने बात की थी participation of the people in the non-cooperation movement. The Indians, people means Indians. Now today we are discussing about the participation of the Indians in the civil disobedience movement. So how did they participate? What was their mode of participation? कितना था? So we started with the poor people and the rich farmers as well. सबसे पहले we have taken different categories who have participated in this movement. We talked about, just a minute children, we talked about peasants, then we talked about business industrialists. हाँ yes, industrialists में ना there are some people who were there who had given some special, and then industrialist, when you talk about, you have to mention about FICCI, got it? So who were these people? Then we talked about the workers. Then we talked about the participation of, most important was the women. Now children, what we need to understand here is why I have taken this slide here. ये जो यहाँ पे आपके सामने the details that are coming, some important dates that are mentioned here. In history, one thing that is very important, which I hope you all know about it, but still to make you understand, one thing that is very important is chronology. Now what is chronology? The sequence in which the events had happened in history. वी कांट टॉक अबाउट हिस्ट्री की 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, दिस वे वी कांट टॉक बिकॉज 1930 when civil disobedience movement had started, we have to see that if we have to mention something about the first world war, तो वो 1914 to 18 के ही सीक्वेंस में आएगा. गॉट इट? तो यहाँ पे some important dates are here children. Even if history point of view, if you are not doing it, do it from the GK point of view. 1918-19 से हमने शुरू किया because when we are talking about गांधी जी, his active participation started from 1916. ठीक है, यहाँ पे एक डेट मेंशन इसलिए नहीं है बिकॉज इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट the time when Gandhiji had started his movements. So UP peasants had organized the satyagraha for the first time under the leadership of Baba Ramchandra. फिर 1919 में, या you know the Rowlatt Act and the Jallianwala Bagh big incident. 21 में, January 21 में, we have non-cooperation and खिलाफत. अभी लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि ऐसे तो डेट्स नहीं पूछे जाते हैं, बट बिकॉज यू आर हैविंग नाउ MCQs, 1 mark क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच दी फॉलोइंग, तो हो सकता है ऑन वन साइड स्टूडेंट्स, वन साइड द डेट्स आर गिवन, ऑन वन साइड द इवेंट्स आर गिवन, तो आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे? दैट्स वाई नाउ व्हाट हैपन्स इज यू हैव टू डू दीज डेट्स. ये सारे डेट्स जो हैं ये आपको बेटे करने पड़ेंगे. प्लीज़ मेक इट इन योर नोटबुक्स एंड सेंड मी द मेल. डोंट वेट फॉर मी व्हेन द चैप्टर इज completed, तो इट इज़ ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड. आई हैव डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स इन द चैप्टर. When the chapter finishes, I do discuss the question answers that are given at the back. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस राइट नाउ वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज व्हेन वी विल बी मीटिंग, जब हम मिलेंगे उस समय हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे. these chapters we have completed, so you feel it is completed. Now don't think and don't feel that when we will be going back to the classes, when we are having a face to face interaction, one to one interaction, then we will be again doing these chapters. No children, because these videos have taken lot of time
and we have invested lot of energy in making these videos. So now whenever you have any problem in the chapter related to any topic, I mean when we meet in the classes also, please see the videos. It would be always there in the YouTube. Nobody is going to delete it. If you want to download it and keep it somewhere, लेकिन फिर आपकी मेमोरी सेव होने में बहुत दिक्कत हो जाएगी. लॉट ऑफ क्लासेस आर देयर, लॉट ऑफ वीडियोस आर देयर, यू कांट सेव इट एनीवेयर. लेकिन किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो आप यू कैन ऑलवेज कंसल्ट दिस वीडियोस. ओके. So 1921 में we are talking about non-cooperation. Then we talk about Chauri Chaura incident. We have already discussed about the Chauri Chaura incident. Then May 1924, Alluri Sitaram Raju was arrested. Alluri Sitaram Raju, remember? Yes, the leader in the tribal areas, in the फॉरेस्ट एरियाज, जो कहते थे कि मेरे अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं एंड आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन स्टैंड द बुलेट्स. ही वॉज पासिंग ऑन द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी, but message of non-violence was not very clear. Then December 1929, Lahore Congress took place. Congress adopted the demand of Purna Swaraj. 1930 children means 1929 में the Lahore Congress, इसमें this is very important. We started celebrating 26 January as the Independence Day before independence. Independence हमको मिला नहीं था, लेकिन हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस मना रहे थे. 1930 में अम्बेडकर established the Depressed Classes Association. Now try to understand this thing here. अम्बेडकर को लग रहा था that Congress is a party that is a group of high caste Indians. कास्ट सिस्टम बहुत प्रीवेलेंट था इंडिया में, एंड पीपल वे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कास्ट सिस्टम. इसमें क्या था इन इंडिया, व्हेन दे हैव tried to come up, the depressed classes I am talking about, they were always subjugated, they were always put back, they were not allowed to participate in the mainstream. So Ambedkar for the first time established the Depressed Classes Association, and March 1930 से Gandhi ji began civil disobedience movement. We have already been doing it. Gandhi ji ends the civil disobedience movement December, and he went to attend the second round table conference. सीक्वेंस है पूरा, ठीक है. अभी यहाँ पे जो इन्होंने एंड किया, प्लीज़ रिमेंबर द हियर ही एंडेड एंड ही वेंट टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब ये अटेंड करने के लिए गए, उस तब तक क्या हुआ, द ब्रिटिशर्स सप्रेस्ड द मूवमेंट इन अ वेरी ब्रूटल मैनर. दे हैव डन इट एंड दे डिड नॉट वांट दैट एनी इंडियन शुड रेज देयर वॉइस नाउ. वो इंडियंस को दबा के ही रखना चाहते थे. 1932 में व्हाट हैपेंड, सिविल डिसोबीडियंस वाज रीलॉन्च्ड. लेकिन इस रीलॉन्च में नाउ पीपल हैड लॉस्ट द एंथुजियाज्म एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, इट फेडेड. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंस हियर इज ना दैट relaunching the movements are not very encouraging. People wanted to participate and women participation was there, we had discussed yesterday. So this that we had done in the last class that we had done, अभी जो हमने किया था कल के वीडियो में ये था that position of women was visualized. औरतों के बारे में ये बातें तो कर रहे थे. दे डिड नॉट वांट एनी रेडिकल चेंज, बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं चाहते थे. बट गांधी जी वॉज सेइंग कि ड्यूटी ऑफ विमेन इज़ टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ. होम एंड हर्थ मीन्स चूल्हा चौका. हिंदी में हम जो कहते हैं ना चूल्हा चौका, घर द्वार, इस तरह की जो बातें होती हिंदी में आपने सुना होगा. दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ के भी at times give certain explanations. So we are talking about it. He felt that the duty of women is to look after home and hearth
and good mothers and good wives. Now, I told it yesterday also, but still I am repeating it, that it does not mean that he wanted the women to be inside the houses. No, children. His motive was not that कि घर में रहें, बच्चे संभालें, खाना बनाएं. No. Main motive was that his movement that he had launched, Gandhi ji, was non-violence. तो जब नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, then what happens that people have to just practice non-violence, and there no is their voice. तो लेडीज एंड वीमेन कैन नॉट टेक इट ऑन themselves ना, मारपीट हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, तो वीमेन कुड नॉट डू दैट. तो कांग्रेस तो वॉज वेरी रिलक्टेंट. पहले था कि विमेन को जो है कोई पोजीशन नहीं देना है, अथॉरिटी, हायर पोजीशंस आर नॉट मेंट फॉर विमेन एंड दे शुड रिमेन आउट. तो बट दे वांटेड कि विमेन शुड बी प्रेजेंट इन ऑल द मूवमेंट्स. दे वर, इट वाज कीन ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस. मतलब विमेन आर देयर, सिम्बॉलिक, बस लाइक सिंबल. Now children, this is a new topic that we are starting today. It's a big topic, and questions from this is very frequently asked in boards. The limits of civil disobedience. Got it? Why we are talking about it is because what has happened is that civil disobedience had a deep impact on the minds of the Indian people. Lekin all social groups were not moved by the concept of स्वराज. स्वराज की बातें तो कर रहे थे, लेकिन सारे ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था स्वराज में. एंड वाई? वन ग्रुप वॉज नेशंस अनटचेबल्स. अनटचेबल्स को अलाउड नहीं था टू पार्टिसिपेट इन ऑल दीज मूवमेंट्स. And this was a grim time. This was a time when a lot of struggle was going on. Gandhi ji was saying कि we have to involve each and every category in these movements. So all these people were calling themselves as Dalit or oppressed. So Congress for a very long time they also had ignored the Dalits. यहाँ से ही सच्ची शुरू हुई. Remember in the previous slide what we had seen is 1931 था ना, when Baba Saheb Ambedkar has formed the association which was only for the depressed classes and depressed groups, because Congress was somewhere dominated by the high class society, जिनको हम सनातनी कहते हैं. सनातन होते हैं ब्राह्मण्स. कौन है? देखो, इट इज़ मैंशनड हियर. अगर ये क्वेश्चन आए हु वेर द सनातनीज, तो यू हैव टू मेंशन द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, दोज हु डिड नॉट अलाउ द लोअर कास्ट पीपल टू एंटर इन द मूवमेंट, एंड दोज हु सेड कि अगर बिकॉज हाई कास्ट हिंदूज हैं तो दे वेयर मनी पीपल, काफ़ी पैसा होता था इनके पास, एंड दे डोमिनेटेड सच मूवमेंट्स, सच बिग मूवमेंट्स. So Mahatma Gandhi declared that Swaraj 100 years तक स्वराज नहीं आएगा until and unless this lower caste is involved in the movement. All the caste should be given due respect. If it is not done, so the lower caste, if they are not included in these movements, so the movement will not carry on in a smooth manner. And if untouchability was not eliminated, he called the untouchables as Harijans. He was the first time for this he said कि in India nobody is an untouchable. Just see, untouchable नाम की कोई चीज़ नहीं है. लोअर कास्ट, डिप्रेस्ड और ऑप्रेस्ड क्लासेस का भी कुछ नहीं है. Everybody who is, अभी क्या है, he said, he gave a very nice theory that those people who are cleaning the surroundings and cleaning the litter and the washrooms and all, how could we call them as, because if we say, there is a proverb in English
cleanliness is next to godliness. So when we are saying cleanliness is next to godliness, those who are cleaning the surroundings, they are not God's children, they are away from the God's children. It is practically not possible. So Gandhi ji started raising his voice against this practice and tried to include all these lower caste people in his movements. He called them Harijan. Children of God. Harijan, na? The people who are close to God. And he organized satyagraha. All the satyagrahas that he had organized, he organized satyagraha that all these lower caste people should be given chance to enter in the temples. किसी को भी टेम्पल के बाहर नहीं रखना है. Everybody should get a fair chance to enter in the temple, and everybody should have an access to public well, tank, roads, schools. All these things should be ensured. क्योंकि पहले था, when the caste system was very prevalent in India, believe me children, these people were not allowed to enter anywhere. अभी ना this बाबा B.R. Ambedkar, this serial is also coming on some channel. अभी मेरे को चैनल का नाम याद नहीं आ रहा है. This channel is there. Please see the channel. See this serial. Lot of things you will get to know about Ambedkar and the Indian society also. आप सीरियल देखते हो तो you don't only know about the personalities, but those personalities, what kind of situation they have faced in India, you will come to know about it. तो get a practical education ना. What is the problem? आप आराम से इसको देख सकते हो, समझ सकते हो. And visual impact is more than audible impact. आप देख के जितने अच्छे से समझोगे, सुन के हो सकता है उतने अच्छे से ना समझो. So he respected the lower caste, and for that what did he do? He cleaned the toilets. He went to the common toilet places. पहले भी common toilets were constructed जहाँ पे कि मतलब घरों में, बहुत सारे घरों में लोगों के पास the washrooms were not there. In the previous times क्या होता था ना, घरों में लोग washrooms जो है वो दूर बनाते थे, क्योंकि it was considered to be a place full of dirt and filth. तो डर्टी सराउंडिंग से दूर रहने के लिए क्या होता था, पीपल यूज टू कंस्ट्रक्ट द वॉशरूम्स आउटसाइड द हाउस. तो टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी जो होते थे ना, भंगी के लिए इन्होंने, भंगी स्वीपर्स जो पहले जो झाड़ू वाड़ू देने वाले थे ना, उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए, एंड अपर कास्ट पीपल ही आस्क्ड देम, ही रिक्वेस्टेड देम टू चेंज देयर हार्ट. अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं करना है. That was his main motive. लेकिन the Dalit leaders were keen on different political solution. Dalit leaders, अभी तो बहुत सारे leaders थे, लेकिन for them the prominent one was बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, B.R. Ambedkar. So they started collecting themselves, they started making their groups, they wanted reserved seats in the educational institutions and separate electorate that would choose Dalit members for legislative council. Now here started there, try to understand what we call this as a political struggle. पहले तो they were struggling in a social manner, socially they were struggling, but now this was a time of political struggle, जहाँ पे कि इनको था कि they have to get place in the parliament. Got it? They should get reserved seats in the educational institutions, just seat is mentioned here, and separate electorate, मतलब कि जो दलित्स हैं वही दलित्स को वोट करेंगे. सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, और इफ़ ए सिटी इज़ देयर इट शुड बी रिजर्व्ड, अभी जैसे है. नाउ देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर द सीट्स, आई मीन जो इलेक्शंस होते हैं ना, इलेक्शंस में द कैंडिडेट्स हु विल बी गिवन द सीट्स वुड बी फ्रॉम द SC और ST, स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब. आज की डेट में ये है, एंड इट हैज़ बिन ऑलरेडी मैंशनड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अभी तो इसको कोई नहीं चेंज कर सकता. Nobody can change this system and nobody can change this practice. Political empowerment बहुत ज़रूरी था, and
they thought that just now that I told that their political struggle started. All the social inequalities that were there कि आपको पार्क में नहीं जाना है, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना है, मंदिरों में नहीं जाना है, दलित पार्टिसिपेशन वॉज वेरी लिमिटेड. नॉन कोऑपरेशन में ऐसा नहीं था. नॉन कोऑपरेशन में इट वॉज नॉट वेरी एविडेंट बिकॉज सारे लोग जिसको भी जैसे भी समझ में आ रहा था दे वर पार्टिसिपेटिंग. ऐसा नहीं था कि दे वर केप्ट अलूफ, लेकिन इट वॉज अ कंबाइंड एफर्ट एंड इट वॉज अ कंबाइंड पार्टिसिपेशन. सो इट वॉज नॉट वेरी एविडेंट. बहुत ध्यान से बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा था. और ख़ास करके व्हाट हैपेंड महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन. नाउ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड हियर इज that the Dalit participation was very limited in which states of India in civil disobedience movement, or Dalit participation was very limited in dash and dash region where their organization was strong. ठीक है. ज्योतिबा फूले was there, नाटकर्णी, बहुत सारे, there were many lower caste people were there who were very active participants. एंड ये जो दलित की प्रॉब्लम चल रही थी, दे वर वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड इनटू वन ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ B.R. Ambedkar. Just now that I have already discussed lot of things about B.R. Ambedkar. He organized the Dalit people into the depressed classes association. एक एसोसिएशन बनाया 1913 में. अभी हम जो डेट शीट देख रहे थे, डेट चार्ट देख रहे थे, उसमें 1930 में दिस वॉज देयर. And he started clashing with Mahatma Gandhi at the second round table conference. I told you ना, अभी यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहानी बताई थी कि ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को बुलाया कि थोड़ी दिन तक दिस मूवमेंट शुड सबसाइड. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इतनी तेज़ी से चल रहा था ना कि ब्रिटिशर्स फेल्ट कि अभी ही उनको दे हैव टू पैक देयर बैग एंड बैगेजेस. उनको अपना सारा पैकिंग करके ना अभी निकल जाना पड़ेगा. दे वर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. So now what happened for the Dalit participation, B.R. Ambedkar has already taken steps and he was called in the second round. उनको भी टिकट भेजा था ब्रिटिशर्स ने लंदन के लिए. वहाँ पे when Gandhi ji went, he saw that it was a different scenario altogether. They were playing very different game. They said B.R. Ambedkar, the Britishers, they said told to B.R. Ambedkar, we'll give you separate electorates. And whatever kind of favors you want from the Britishers, we are ready to do that. Gandhi ji was sitting quietly and listening to all this. He said, please stop playing the game of divide and rule. आपने हमको यहाँ बुलाया है सिविल डिसोबीडियंस की बात करने के लिए. If you have called us here to talk about civil disobedience, why are you talking Ambedkar about electorates? That was his question and that was his anger. And B.R. Ambedkar said, अभी क्या होता है कि suppose you have two friends are there. So I say to one of your friends कि बेटा आप अच्छे से करना, मैं आपको अच्छे से lenient marking करूँगी. तो the other boy will say, मैम मेरा क्यों नहीं करेंगे? तो the boy who is getting the lenient mark he'll say, यार तो मेरे दोस्तों के दुश्मन हो, मैम मुझे मेरे लिए अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं, why are you opposing it? Same thing happened there. When Gandhi ji said this, B.R. Ambedkar said, आपने आज तक तो untouchables के लिए you have not done anything. Now when the Britishers are doing something, why are you opposing the untouchables? हाँ, so divide the policy and British government conceded the Ambedkar's demand. तो गांधी जी को बहुत गुस्सा चढ़ा and he started his fast unto death. Because Britishers have already played their game of divide and rule very smartly and they have already separated the Hindus and the Muslims. Hindu Muslim को तो अलग कर ही दिया था. Now they were planning to separate the lower caste people also from the society. तो divide था, division होता चला जा रहा था. Division was happening on a very large scale. So he said separate electorates would slow down the process of their integration into society. He said कि we are favoring the everybody to come together. Untouchability की practice everybody is going away with it. Then why this kind of a thing?
So Ambedkar accepted Gandhiji's position and the result was the Pune Pact of September 1932. अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ. पूना में गांधी जी वॉज इन जेल एट दैट टाइम. यरवाड़ा जेल दैट इज देयर इन पूना, वहाँ पे ही वॉज देयर एंड ही अंबेडकर वॉज ब्रॉट देयर. अंबेडकर को वहाँ पे बुला के और ये पूना पैक्ट साइन हुआ. व्हाट वॉज पूना पैक्ट? वन मार्क के लिए वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट वॉज पूना पैक्ट? इसमें क्या था? The depressed classes means lower caste, latter कहते हैं. That time they were called as depressed classes. तो इनको reserved seats दिया इन्होंने. They said, गांधी जी promised कि further if there would be any elections, we will give you seats in provincial and central legislative council. Separate seats रहेगी. Seats would be reserved for the depressed classes candidates. लेकिन सारे लोग वोट करेंगे. ये मत करो कि ओनली द डिप्रेस क्लास पीपल विल वोट. तो पता चल जाएगा जो लोग वोट करने जाएंगे ना, देन पीपल विल वेरी वेल अंडरस्टैंड, अच्छा डिप्रेस क्लासेस ओके, लोअर कास्ट ओके, शेड्यूल कास्ट नो. दे सेड सारे आपकी सीट्स रिजर्व रहेगी. द कैंडिडेट्स हु विल बी देयर स्टैंडिंग फॉर इलेक्शंस, द सीट्स वुड बी देयर रिजर्व्ड, बट general electorate would be there. Elections would happen generally. So, but the Dalit movement was continuing to be apprehensive. मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे कि कांग्रेस was leading the movement. They were not. पहला तो ये हो गया कि untouchables did not participate in the civil disobedience movement. This was one of the major reasons. Second was the Muslim political organizations in India. All the Muslim people, the political system that existed, they were also lukewarm in their response to civil disobedience. They did not like the civil disobedience. So because the Muslim participation was very low. Non-cooperation में क्या हुआ था? Non-cooperation was a combination of non-cooperation and Khilafat. Hindu-Muslim unity was very well felt there. And non-cooperation, when after the decline of non-cooperation, what happened? That large section of Muslim people na, large section of Muslims felt alienated from the Congress. उनको लगा कि Congress is again dominated by the higher caste people, by the Hindus. It is slowly becoming an organization by Hindus. And 1920s के बाद Congress came to be associated with Hindu religious nationalist groups. मतलब Congress was becoming a Hindu nationalist society, Hindu religious group, and जैसे Hindu Mahasabha was there, तो any member who is there, the member of the Congress, he can be the member of the Congress as well as the member of the Hindu Mahasabha. So Hindu Muslim unity was worsened, मतलब दिन पर दिन खराब होता जा रहा था. Each community organized religious processions. क्या हुआ? Hindus अपनी procession निकालते, procession मतलब कि जुलूस. Got it? Hindi try to, but just I'm explaining it. They try to show their militant fervor कि देखो हम ज़्यादा ताकतवर हैं. The religions were trying to pose their power on the others. तो क्या हुआ कि इंडिया में at that time हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस, बहुत सारे दंगे हुए, दंगे शुरू हो गए थे. अभी यहाँ पे वन थिंग आई वांटेड टू मेक इट वेरी क्लियर दैट द ब्रिटिशर्स वेर वेरी सक्सेसफुल इन डिवाइडिंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. ओके, एंड क्लैश जब शुरू हो गया, द मोस्ट हैप्पी पीपल वेर द ब्रिटिश. Riots were there, दंगे यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है, various cities. Every riot deepened the distance between two communities.
हिंदू मुस्लिम्स की जो दूरी थी, got it kept on increasing, and no solution was found out, and a time came when the Indians feel, और जाते जाते ब्रिटिश देख ही रहे हो पाकिस्तान का तोहफ़ा दे के गए हमको. आई एम टॉकिंग इन अ वेरी जनरल मैनर दैट वी रिसीव्ड दिस गिफ्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. इतना बेटे, just do it and try to understand this. In case you have any doubts, you can get it cleared on the in the online sessions. Thank you so much, children.